How do I find a way to stay connected with my children when they're in this stage? When they were little, they would climb up onto my lap and ask me to sing them lullabies and read them stories. And now I feel the time that we have together just slipping through my fingers. My kids are digital native youth, and that means the entire time they've been around, so have video games and smartphones and the internet and all of the technology. So I've been watching my kids play video games for a while now, but I had no interest myself until I had this genius idea. I wondered, what if, instead of trying to pull my kids into my world with me, what would it be like if I stepped into their world with them? I mean, back in the day, I was pretty good at Diddy Kong racing. So how hard can it be? Picture this. I'm sitting at my house with my headset on, with my PC in front of me, and my kids are over at their dad's house. My oldest, who are then 10 and 12, are there with their headsets on and their devices. And we all dive in to the wonderful, magic, mysterious world of Fortnite. Immediately, my kids are off, racking up points, opening treasure chests. I literally don't know what they're doing because I am right where I landed, spinning in a circle, don't even know how to open a door or open a treasure chest or move on to anything. And pretty soon, I have to let my kids know I've been shot and I'm down. Immediately, my 12-year-old said, "It's okay, hold on, Mom." And this kid comes running towards me, building a structure out of literally nothing and holding his hand over me to heal me. That was kind of cool. I didn't know you could heal people. My middle son, if you have a middle son, you can probably relate with this. He comes crashing a semi-truck through the wall his brother just made, hops out in a full-body banana costume, and lays his hand over me to heal me. After the exasperated sigh of, "Why do I have to?" That was the point where I could have quit, where I could have said, "I'm terrible at video games. This is not for me." But I didn't quit. I didn't quit because we were laughing so hard. I was laughing at the absolute absurdity of this entire situation. And I suspect they might have been laughing at how completely terrible I was at video games. But at that point, they decided that they would stick closer to me and teach me how to play this game. But I didn't just learn about the game. I learned about them. I learned about the connections that they make together and the way they communicate while they're playing these games. And maybe, the most importantly, I learned this is the connection that I've been craving as well. I feel like we played and connected in a way that not a lot of teens and parents get to connect, because we connected through play. We connected through them teaching me a new skill, and me being brave enough or silly enough to think I could maybe play along. And as it turns out, I wasn't alone. I was talking to my brother Amos about video games, and he told me something surprising. He told me that he has connected with his nieces and nephews more through video games than anything else in the entire world. Before you judge him too harshly, you need to understand that Uncle Amos lives in New Zealand. Before he was in New Zealand, he lived in Germany. So the entire time that my kids have been around, they've never known Uncle Amos. They've never been in the same country as him. He would not get an hour-long phone call from my kids, but hopping on Fortnite, playing games together, making memories together, maybe learning how absolutely feral my middle son is. It's a game changer. Now you might be sitting there wondering, what is esports? Luckily, it's pretty simple. Esports are just competitive video games. Anything can be an esport if it's a competitive digital game. Games like Fortnite, shooter games like that can be an esport, or games like chess can be an esport if it's played with computers. What ties them all together is that they're all competitive. If you have ever talked to a child, like ever in your life, you've probably heard of games like Mario Kart, Fortnite, Rocket League, all esports, or electronic sports. But do not call them electronic sports,
because you will lose all of your street cred, especially with your children. Trust me on that one. And it's not just my kids who get to have this experience now, because the state of South Dakota this year sanctioned esports as a high school activity. Yeah, that's pretty great. So right now, kids are playing esports teams within the four walls of schools in South Dakota. This is important because these kids are not just playing, they're practicing. They're practicing and gaining skills that they will use for the rest of their lives. Skills like leadership, teamwork, communication, strategy, and the ability to handle tough emotions. So fast forward to these same kids starting their careers. Businesses also get to benefit from the skills that kids have gained in high school and in college. And in that same vein, we can talk about the inclusivity of esports. I challenge you to think of a more inclusive sport anywhere in the world. It doesn't matter your age, your background, or your ability. Anyone can play, compete, grow, and win in esports. Of course, there's other benefits that I didn't notice until I got further into this with my children. I understand that as a parent, video games and esports are kind of a complicated subject because we fear the communication that happens within these spaces, especially because sometimes our kids are talking to strangers. I think that that's a valid fear. And I understand now when I joined my kids in this space, I got to learn with them and help teach them how to navigate this space. I also learned that it's not just scary, there's joy in these spaces because this is a shared space and we can have shared experiences here. When I was there with them, I got a firsthand glimpse into their world and I learned how to better protect them and help them through this space. In fact, video games even helped me when it was time to introduce my kids to someone new. As a single parent, it can be kind of awkward to introduce your kids to your significant other. So a couple months before we introduced our families, we all hopped on Fortnite to play together. This is a life hack. I am serious. So his kids and my kids and us all jumped onto Fortnite together. And it was pretty awesome because दोस्तों आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसका नाम लेते ही आपके जहन में कुदरती खूबसूरती आ जाती है। ऐसा मुल्क जहां सबसे ज्यादा लोग हनीमून के लिए जाते हैं। इस मुल्क में आप पीएचडी साथ दिखाएंगे। आज की वीडियो देखने के बाद आप इस मुल्क में जाने का जरूर सोचेंगे। एंड तक जरूर देखिएगा। चलें अब निकलते हैं स्विट्जरलैंड के एक खूबसूरत सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम स्विस कॉन्फेडरेशन है। स्विट्जरलैंड की कुल आबादी 88 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 102 नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 41,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 135वें नंबर पर आता है। ये मुल्क तो छोटा सा है, लेकिन यूरोप में इकोनॉमी के लिहाज से पहले नंबर पर आता है। ये एक लैंड लॉक कंट्री है, मतलब इसे किसी भी तरफ से समुंदर नहीं लगता। अगर इसके बॉर्डर की बात करें तो फ्रांस, इटली, जर्मनी, प्रिंसिपैलिटी ऑफ लिechtenstein लगते हैं। दोस्तों ये मुल्क इतना खूबसूरत है कि अगर एक बार आप यहाँ गए तो वापस आने का दिल ही नहीं करेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा चॉकलेट इस मुल्क में बनाई जाती है और सबसे ज्यादा खाई भी इसी मुल्क में जाती है। स्विस वॉच का नाम तो आपने सुना होगा। दुनिया की सबसे महंगी और स्टाइलिश घड़ियां भी इसी मुल्क की हैं। दुनिया का सबसे बेस्ट बैंकिंग सिस्टम भी इसी मुल्क में है। इसे दुनिया का सबसे महफूज तरीन मुल्क भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ के लोग दुनिया में सबसे बेहतरीन जिंदगी गुजारते हैं। मुल्क का दारुल हुकूमत बर्न है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस सिटी ज्यूरिख है। अगर हम शहर का नाम लें तो सबसे पहले स्विट्जरलैंड का नाम आता है। ऐसा क्यों है ये हम वीडियो में आगे आपको दिखाएंगे। स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी 700 अरब डॉलर की है, जो दुनिया के पहले 20 ममालिक में आती है। सालाना आमदनी के लिहाज से ये दुनिया के 7वें नंबर पर आता है। इस मुल्क में रहने वाले लोगों की सालाना आमदनी 92,000 डॉलर है, जो पाकिस्तानी 2 करोड़ 62 लाख के करीब है। इसी वजह से ये मुल्क दुनिया के सबसे खुशहाल ममालिक में आता है। स्विट्जरलैंड का एक हिस्सा 8 माह बर्फ की चादर से ढका रहता है,
जबकि दूसरी तरफ रंगीन फूलों से भरी हुई वादियां हैं। लेकिन इससे भी खास बात यह है कि कुदरत ने जितनी खूबसूरती इस मुल्क को दी है, उतना ही ध्यान यहाँ की गवर्नमेंट भी रखती है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर पर भी टूरिस्ट के लिए तमाम सहूलतें मौजूद हैं। इसी वजह से ये मुल्क टूरिज्म से सालाना $17 बिलियन कमाता है और टूरिज्म ही स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी का सबसे अहम हिस्सा है। स्विट्जरलैंड के रेलवे ट्रैक की अहमियत सबसे ज्यादा है। इस मुल्क में जो भी जाता है ट्रेन का सफर जरूर करता है। इसका 5% ट्रैक पहाड़ों और ग्लेशियर से गुजरता है, जो देखने वालों के लिए एक अलग ही दुनिया का मंजर पेश करता है। ये ट्रेन कभी वादियों से गुजरती है, कभी मैदानी इलाकों और कभी बर्फीले पहाड़ों से गुजरती है। ट्रेन के सफर के लिहाज से जापान के बाद स्विट्जरलैंड दूसरे नंबर पर आता है। पूरे यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन भी स्विट्जरलैंड में मौजूद है, जो समुद्र से 4158 मीटर की ऊंचाई पर है। इस स्टेशन का नाम जंगफ्रॉज स्टेशन है, जो यूरोप का सबसे ऊंचा स्टेशन है। दुनिया का सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी स्विट्जरलैंड में मौजूद है। आप जब भी जाएं तो स्विट्जरलैंड का स्विस पास ले लें, तो आप पूरे स्विट्जरलैंड में बोट, बस, ट्रेन, कार सब पर फ्री सफर कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड में आमतौर पर ना ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। इसी वजह से इस मुल्क में करोड़ों टूरिस्ट आते हैं। बॉलीवुड मूवीज की भी बहुत ज्यादा शूटिंग स्विट्जरलैंड में की जाती है, क्योंकि यहाँ के सीन ही ऐसे हैं जिन्हें आप बस देखते ही रह जाएंगे। स्विट्जरलैंड को झीलों का मुल्क कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि इस छोटे से मुल्क में तकरीबन 1500 झीलें मौजूद हैं। यहाँ पर हर 5 किलोमीटर में आपको एक झील मिल जाएगी। दोस्तों, स्विट्जरलैंड को पेरिस के बाद सबसे ज्यादा स्टाइलिश मुल्क कहा जाए तो गलत ना होगा। यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन माना जाता है। इसी वजह से यहाँ के लोगों की औसत उम्र 84.25 साल है। जब पैसा हो, कोई परेशानी ना हो, साफ हवा, साफ खाना, तो औसत उम्र तो ज्यादा होगी। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूं, जो आजकल दुनिया के हालात हैं, तीसरी जंग अजीम तो शायद होकर रहेगी और बहुत से मुल्कों के पास एटम बम भी मौजूद है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद स्विट्जरलैंड के लोग बच जाएंगे। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने अपने मुल्क के लोगों के लिए बहुत से बॉम्ब शेल्टर बनाए हैं, जहाँ पर 115% मुल्क के लोग जाकर रह सकते हैं। मतलब 15% लोग दूसरे मुल्कों से भी आकर खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के लोगों में शादी की कोई जल्दी नहीं होती, बल्कि ये देर से शादी करते हैं। ये आम तौर पर 32 साल की उम्र में शादी करते हैं। दोस्तों, ये मुल्क दुनिया के सबसे महंगे तरीन मुल्कों में आता है और क्राइम ना होने के बराबर है। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिएटिव मुल्क का अवार्ड भी स्विट्जरलैंड के पास है? यही नहीं, बल्कि स्विट्जरलैंड पिछले 10 साल से ये अवार्ड हासिल करता आ रहा है। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुल्क के लोग कितने क्रिएटिव हैं। इस मुल्क में सबसे ज्यादा लोग बिजनेस करना पसंद करते हैं और इस हद तक बिजनेसमैन बन चुके हैं कि बाप बेटे से भी बिजनेस करता है और माँ अपनी बेटी से भी बिजनेस करती है। स्विट्जरलैंड में एक लड़की बैंक से कर्जा लेने गई तो बैंक 4% मुनाफे पर लोन दे रहा था, लेकिन गारंटी बहुत ज्यादा मांग रहा था। लड़की ने अपनी माँ को बताया तो माँ ने कहा, कर्जा मैं दे देती हूँ, लेकिन 5% मुनाफे पर दूंगी, क्योंकि बैंक 4% के साथ